and तो we had those televisions, black and white televisions, right? I was a child, 1983, 84 I'm talking about. In that television, and it was like my television, the television that I had at my home was a Sonodyne television, right? और उसमें क्या था ना, उसमें वो जो channels थे ना, fan के regulator जैसा घूमता था, ढाक ढाक ढाक, and there used to be 3 channels, DD1, Doordarshan 1, DD2, and later there was another channel introduced that was called DD3, DD Sports. So in Doordarshan 2, every Friday there used to be a serial. जैसे आप लोग सीरियल देखते हो ना, सेक्रेड गेम्स, ये तरह तरह की सीरियल देखते हो आप लोग, हैं? ये भैया नहीं डोंट वॉच, झूठ बोल रहा है. So you watch all those TV serials, binge watch at times. So we used to watch that TV series called Johnny Sacco and his Flying Robot. वो एक चाइनीज सीरियल हुआ करता था, it was a Chinese serial, and वहाँ पे it was more like a Marvel Avengers movie of today. So there was this little Chinese guy, his name was Johnny, and class 9? Okay, still all right, okay. So this Johnny was, he was a Chinese guy, and he had a robot, huge robot. And Johnny, that robot used to fight all extraterrestrial animals and creatures that used to come to Earth. ठीक है? And Johnny क्या करता था? Johnny had a watch. वो watch open करता था and he used to talk to that robot and give that robot instructions. Have you watched that movie Real Steel? Real Steel? Real Steel movie? Yes. Hugh Jackman Real Steel movie, yeah. So there's like robots fighting against each other, right? And Hugh Jackman used to command that robot. There was voice command and voice control. So similarly, Johnny commanded that robot through a watch. Right, 1980s I'm talking about. He used to command the robot, ki robot throw up, punch, do this, give a whatever, and the robot used to fight those extraterrestrial creatures as per the command of Johnny. This was 1980s. Fast forward 2 decades, 20 years. That watch is a reality today, right? Many of you wear smart watches. Correct? You can talk, you can do whatnot with that watch. 20 years it just took for our technology from being a fiction to reality, right? And this watch can do so much more. It can track your calories, heartbeat, SpO2 level, and so much more, right? Because someone is wearing a smart watch as well. So that was not there back in the days. 20 years it took for technology to come from fiction to reality, correct? Have you watched a movie called Matrix? Matrix, Keanu Reeves Matrix, abhi uska recent, like the fourth, I think the 5th sequel of that movie has come, Keanu Reeves Matrix. In Matrix 1, which is like the first Matrix, the movie came in 1990s, correct? And in that movie, there was a scene where the heroine of the movie is being chased by bad guys. The heroine of the movie was called Trinity, and she is being chased by a set of 3 bad guys. These bad guys are essentially computer programs, and these computer programs are trying to kill Trinity. Now Trinity comes to the edge of a roof, and she has 3 choices. Number 1 choice, she has to jump off the roof. She'll eventually die. She may or may not survive. 2, she has to turn around and fight back those bad guys, right? But those are computer programs, you cannot win against them. And the third option that Trinity had was, there was a helicopter, and she had to fly that helicopter. So that was the third option. So what Trinity does was, she calls a friend of hers. The friend was called, those who have seen the movie, you can recollect this scene. That friend is called that operator. So she calls that friend of hers and says that, well, there is this helicopter, this model, this make, I need to learn how to fly that thing. The operator pulls out program, puts in some code, and uploads a program. In 30 seconds she knows how to fly that thing. She just closes her eyes and 30 seconds. See, biologically our brain is programmed to take that level of stimulus, right? अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप लोग तो बायोलॉजी है ना, 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी. ब्रेन में क्या जा रहा है? What is your brain? Signals, right? इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, आपके आंख से, कान से, यू आर परसीविंग एवरीथिंग, एंड आपका दिमाग में क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, राइट?
And this electrical impulse is telling you that there is this professor, marketing professor, his name is Rick, and he is giving us some insights into marketing, right? So that's what your brain is telling you, and the brain is only registering electrical impulses. All throughout your schooling, all throughout your college, or all throughout this program that you are in, what we are doing here is systematically giving you electrical impulses. इससे पहले कोई प्रोफेसर थे, वो आके आपसे कुछ बताए. It's a systemic flow of impulse. Then I am here. I'll give you a systemic flow of impulse to your brain, and then there would be a sequence of impulse. If you look at the program, there is a very structured way of going about the program, and you will sit through and enjoy that program. Correct? यही पूरा जो प्रोग्राम का जो इनपुट है आपका दिमाग में, मैं अगर 1 मिनट में दे सकते हैं ना, 1 मिनट में अगर ये इनपुट दे दिया आपके दिमाग में, तो फिर ये दिन भर आपका बर्बाद नहीं होगा. 24 आवर्स. स्कूल में बच्चे जाते हैं या कॉलेज में बच्चे जाते हैं, 4 साल लगाते हैं पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन हो, मास्टर्स हो, 2 साल मास्टर्स के, राइट? ये सब तो जरूरत है ही नहीं. पूरा स्कूल एक ATM मशीन बन जाएगा. ऑल यू नीड टू गो इज टेक योर फादर, बेटा क्या चल रहा है? हाँ पापा 12th साइंस, ठीक है कोई बात नहीं. सिट देयर, पुट अ जैक इनसाइड, put the credit card, debit card, key in, okay, tuck, 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 class 12, science, tuck, 10 minute बैठो, and you come out, you're 12th science. कितना साल लगता है टेक्नोलॉजी को फिक्शन से रियलिटी में आने के लिए? 20 साल. This technology is almost there. आजकल जैसे बच्चे लोगों को वैक्सीनेशन देते हैं ना, लोग वैक्सीनेशन देते हैं ना, बच्चे लोगों को घर पे वैक्सीनेशन देते हैं. देयर इज अ सीरीज ऑफ वैक्सीनेशंस. वैसे आजकल लोग हाथ में माइक्रोचिप्स लगा रहे हैं इन एडवांस्ड कंट्रीज. दैट माइक्रोचिप इज वायर्ड विथ योर ब्रेन. आपको कुछ भी करना है माइक्रोचिप में डाल दो, योर ब्रेन रजिस्टर्स एवरीथिंग. सो दैट्स द वर्ल्ड दैट वी आर मूविंग टू, राइट? आपने सुना होगा आपने टर्मिनेटर मूवी देखा है? टर्मिनेटर मूवी, Arnold Schwarzenegger and the Judgment Day and all that stuff. It's a movie that talks about machines fighting human beings, and human beings are trying to survive, right? Fight against the machine. ठीक है? तो ये पूरा मूवी का थीम है. ऐसे इसका भी सीक्वल है बहुत सारे. This Terminator 2, very famous movie sequels. तो अच्छा, बाहुबली मूवी तो देखा होगा ना, ठीक है? अच्छा, बाहुबली में जब बाहुबली अटैक करता है, दुश्मन को जब अटैक कर रहा है, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग? अगर 1000 लोग एक साथ अटैक कर रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अमॉन्ग दोस पीपल? स्ट्रैटेजी. बट ठीक है, स्ट्रैटेजी बना लिया, फिर कोऑर्डिनेशन. करेक्ट? आपस में कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है एक अटैक करने के लिए, राइट? तो अगर मशीन्स ह्यूमन बीइंग को अटैक कर रहा है, तो मशीन्स आपस में कोऑर्डिनेट करना जरूरी है ना? है ना जरूरी? मशीन्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना है. मशीन्स तो प्रोग्राम्स है, so they have to coordinate among themselves. That means machines have to talk to machines. Correct? पता है आपको, आज के दिन में भी मशीन्स आपस में बात करते हैं. हम लोग we don't realize. आप लोगों ने कभी मम्मी पापा के साथ दुकान में जाके उनको देखा है टैप पेमेंट करने के लिए? देखा है ना? टैप पेमेंट करने के लिए टैप करो, पेमेंट हो गया. करेक्ट? दैट कार्ड हैज अ चिप एंड दैट्स अ मशीन. जो POS टर्मिनल है, दैट्स अ मशीन, एंड व्हेन यू टैप, द मशीन्स आर इंटरेक्टिंग अमंग देमसेल्व्स, राइट? अगर इफ आई गो टू देयर लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड, ये बोला है भाई तेरे को कितना पैसा चाहिए? बोला मैं 10 रुपया चाहिए. है ना तेरे पास? हाँ ये ले. करेक्ट? दिस इज द कन्वर्सेशन दैट हैपेंड. ऑल यू नीड टू डू वाज टैप. ये बाजू में एक दुकान है, कॉलेज के बाजू में, आई स्टे इन कैंपस, इस मुस्कान बोल के एक दुकान है उधर बीच बीच में आई गो देयर फॉर अ कप ऑफ टी एंड स्टफ. तो एक दिन क्या हुआ, उसका POS टर्मिनल देखा. मैंने सोचा यार अच्छा POS टर्मिनल, यार तेजराम जी जरा इसमें 10 रुपया डालो जरा. ही कीड इन 10 रुपीज. आई जस्ट फ्लिप्ड आउट माई पर्स. मैंने कार्ड भी नहीं निकाला उससे, पर्स बस मशीन के ऊपर रखा. बूम, गॉन 10 रुपीज. मुझे पता भी नहीं कौन सी कार्ड से गया है वो, तो मुझे आई हैड टू एक्चुअली फ्लिप आउट माई फोन टू सी. फिर तो मेरा दिमाग चलने लगा कि बेटा
ये पीओएस टर्मिनल मशीन लेके एक दिन मेट्रो में चढ़ जाओ, 2000 टाक, अगली स्टेशन में उतर जाओ, वापस उठ के 2000 टाक. बट इट्स जस्ट दिमाग चल रहा था. बट द पॉइंट इज, यू सी मशीन्स टॉकिंग टू मशीन्स. तो जजमेंट डे कैन बी देयर रियल सून. इट्स ऑल फिक्शन गेटिंग कन्वर्टेड टू रियलिटी. अभी भी आपको मशीन्स के और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट किस लेवल पे हो गया है. मैं आप किसी के घर पे वो है Amazon, Alexa, because guys, Alexa, Google Home Mini and stuff, have that right in your homes, you know. और बच्चे लोग बदमाशी करते हैं, बेटा जोक बताओ, बेटा ये करो, बेटा वो करो. You keep on doing it, right? With Amazon and Alexa, those who use iPhone, Siri, tell me a naughty joke, सब करते रहते हो आप लोग. And that's quite a part of growing up. I have one of these machines installed in my office. And I'm not a very early morning person, so I hit my office at around 11 o'clock every day. तो 11 बजे एक दिन ऑफिस, हर दिन ऑफिस जाता हूँ, and I say, hey Google, good morning. And then Google gives me a whole bunch of things. Hey Google, hey Rick, have a nice day, good morning, this is how your day looks like, these are the meetings that you have, these are the classes, and this is what the weather looks like, this is how far is home, there is traffic, and then these are the top news for the day. Google tells me 10 different things. तो एक दिन मेरा सुबह 9 बजे मीटिंग था, ठीक है, तो मैं आ गया 9 बजे मीटिंग करने. एंड जस्ट लाइक रूटीन आई केप्ट माय बैग एंड से हे गूगल गुड मॉर्निंग. आई मीन यू वोंट बिलीव, मतलब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. मतलब 30 seconds तो मैं आई वाज जस्ट स्टैंडिंग स्टिल. दिस लिटिल डिवाइस गॉट ऑल एक्साइटेड. Hey Rick, you found yourself a new good morning routine. What would you like to do differently today? Would you like this? Would you like that? That's a goddamn machine. It's not supposed to show emotions. You see? It's not supposed to show emotions, right? It's a machine, man. Yeah, I go home, my golden retriever jumps on me. It's a living being. I can understand. My little daughter hugs me. Understandable. But that's a machine, man. It's not supposed to show emotions. So 30 seconds I was like, yaar, ये तो गजब है. So I went off to the meeting, then I came back and started doing my research. Then I realized Google itself would pick up 40,000 data points about you every single day. 40,000 data points about you every single day. I mean, imagine what all you have searched on Google. Your friends don't know. Your parents forget it. Right? Your brothers, sisters, they don't know. Google knows it all. है ना? Doesn't matter whether you do Control Shift N. Still Google knows it all. You see? And they can actually profile you. And in the process, if you see how technology is transforming businesses, and that's where we are moving to, the advent of technology has changed the way people communicate or the way marketers communicate with people in terms of products and services. एक मूवी आया था, Minority Report. Did anyone of you ever watch that movie, Minority Report? Okay. Minority Report is a movie where people are trying to predict crime even before they take place. From all that information they are gathering, they are processing that intel, and even before the person is committing crime, bank robbery or murder, they are trying to catch hold of that person. And so is true today in case of business. People are trying to predict your purchase even before you think of purchasing it. कैसे? I'll give you some instances. आप लोगों ने Instagram, Netflix पे you guys must have put up selfies. Snapchat में you might have done streaks, right? My daughter comes to me, ये बहुत streak हो गया, streak 100 streak है, तो but what's the purpose? नहीं, मजा आ रहा है. But you keep on sharing stuff with people. You keep on posting photographs, right? But the thing is, when you are putting up a selfie on Instagram, say for instance, you put up a selfie on Instagram. दिवाली का दिन में आप घर पे पार्टी चल रहा है, मम्मी पापा भाई लोग सब आए हुए, कजिन्स वगैरह, आपने फोटो निकाल के इंस्टाग्राम में डाला, करेक्ट? You know, you are of course telling the world that you are having a good time with your family. But what you don't realize, you are also telling the world that the curtain at the background needs to change.
The TV in your hall is not a smart television. You're also telling them, you are in, say, for instance, Jaipur or Delhi NCR, and you don't have a AC in your drawing room. You're telling the world this, all right? So no wonder when you open Google next time, or when you're going to a Facebook or Insta or any other website, you see a AC popping up. Thak. हाँ यार AC गर्मी यार, पापा एक AC लेते, correct? आपको पता भी नहीं कहाँ क्या information you have already provided as digital footprint, and people are analyzing this information, and they're trying to come up with products and services that people would eventually buy, right? और लोगों को कभी कभार पता भी नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए जब तक वो चीज़ मार्केट में नहीं आता है. आप लोग जब स्टार्टअप के आइडियाज लेके आ रहे हो, याद रखना आपको प्रिडिक्ट करना है कि आगे जाके लोग क्या खरीदेंगे, उनका नीड्स क्या हो सकता है. So that's where you start. In this context, let's talk about this company called Apple. You know Apple, phones, very expensive phones. Apple would come up with stuff. Now you know how Apple does their own little research. मेला लगता है ना, बीच बीच में मेला लगता है आपके मोहल्ले में कहीं ना कहीं पे. वैसे एप्पल क्या करती है, सब मेले में जाके एक गाड़ी लगा देता है. उस गाड़ी का नाम है लालापलूजा. उस गाड़ी में दुनिया भर के डिजिटल इक्विपमेंट्स लगे हुए रहते हैं, जहां और सब फ्री है. किड्स गो देयर एंड इंटरैक्ट विद दोस इंस्ट्रूमेंट्स. कोई रोबोट, कोई फ्यूचर बोल रहा है, कोई कुछ मैजिक दिखा रहा है, देयर आर सम गेम्स एंड स्टफ लाइक दैट. एंड ऑल दिस devices are equipped with eye wall tracking, heat sensors, तरह की sophisticated instrumentation that captures your behavior, the children's behavior between the age of like 4 till 10-15. These children come and interact, and they capture all this information. Are they buying products and services now? No. But why is Apple doing all that research? Because in 10 years or 15 years down the line, these children will grow up and they will be active consumers. They will go ahead and buy products and services, right? So when they become consumers, Apple would have the right kind of product for them. So this is where the world is moving. And in this context, when you are trying to come up with your own company, your own product ideas, you have to understand that you cannot do away with technology. So technology and your business goes hand in hand. अब आजकल के जितने भी नए businesses आप देखते हो, ओयो, ओला, उबर, स्विगी, ब्लिंकिट, ये सारे online businesses हैं, right? And they make use of digitization, and they also have a product or service, right? आप लोगों ने लेंसकार्ट की नाम सुना है? लेंसकार्ट पहले तो एक ऑनलाइन स्टोर था, अभी तो लेंसकार्ट की दुकान भी होते हैं ना. तो देखो ऑनलाइन वाले आ गए प्रोडक्ट लेके ऑफलाइन. शॉपर स्टॉप का नाम सुना है? शॉपर स्टॉप वाज अ ऑफलाइन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर, वो अभी आ गए ऑनलाइन. सो यू सी, प्रोडक्ट्स बेचने वाले जो फिजिकल प्रोडक्ट बेचते, दे आर गोइंग ऑनलाइन पीपल आर कमिंग ऑफलाइन, एंड वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद कंज्यूमर्स ऑन द गो. वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट कंज्यूमर्स on the go. So whatever be your product idea, ensure that you incorporate some element of technology to it from a marketing point of view. And it is even more important at your age, because your relationship with technology is very, very different than our relationship with technology. Mane, the way for you, for us, I understand that there is a virtual world and then there is a real world. आप लोगों के लिए the virtual world is equally as real as the real world. Your sense of achievements are also different. For us, एक दिन घर पे एक प्लम्बर को बुला के लेके आया, that used to be an achievement. एक दिन टैक्सी रोड पे खड़े होके बुला के, हाँ भैया टैक्सी मेरे घर पे मम्मी पापा को लेके जाना है, टैक्सी लेके आया घर पे, that used to be an achievement. आजकल तो that is at a finger's tip, ओला बुला लो, उबर बुला लो, right? That's not achievement for you guys anymore. स्कूल में गया, एक लड़की ने मुस्कुरा दिया, वो होता था achievement. आप लोगों के लिए वो तो अचीवमेंट है नहीं. आप लोगों के लिए, हाँ भैया मैंने व्हाट्सएप स्टेटस दिया, इन 15 मिनट्स 200 लोग देख लिया, दैट्स एन अचीवमेंट, करेक्ट? आई सीन माई डॉटर ग्रो. आई मीन शी इज इन द 10th standard right now, writing her boards. When she was like
And I have a very different relationship. She's like, your generation. So she does not call me Papa, Baba, anything. She calls me by my name, Rick. Okay? अब तक वो घर पे प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होता है पेरेंट टीचर मीटिंग में. अभी हम गए पेरेंट टीचर मीटिंग, उनका मैथ्स कॉपी दिखा रहे हैं, जी बेटा क्या है सीन है, ये मैथ्स तो मुझे याद है, तुम कैसे गलत करके आ गए. एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग, टीचर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हर, फ्रंट ऑफ मी, शी इज लुकिंग एट द कॉपी. अरे रिक ऐसा नहीं है, रिक ये गलत हो गया, रिक वो गलत हुआ. टीचर मेरी तरफ देख रहा है, ये पापा को नाम से बुलाता है यार, इसको स्कूल ना भेज के घर लेके जाओ, कुछ संस्कार वंस्कार दो इनको. सो दैट्स द काइंड ऑफ रिलेशनशिप आई हैव विद माय डॉटर. सो व्हेन शी वाज इन 5th स्टैंडर्ड, मैं एक दिन आया घर एंड शी इज डूइंग समथिंग ऑन द मोबाइल फोन, राइट, एंड शी इज लाइक डूइंग समथिंग, किसी से बात कर रहा है, बेटा ऊपर 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 मार 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 भाग रहा है. देन आई आस्क्ड माय वाइफ कि व्हाट इज शी डूइंग. मुझे नहीं पता, आपका लाडली है, आपने फोन दिया, आप पूछो जाके. आई वेंट टू हर, जिया व्हाट आर यू अप टू. शी सेड रिक डिस्टर्ब मत करो. मैंने अच्छा. देन आई वेंट एंड peeped in what she is doing. She is playing PUBG in multiplayer mode. Imagine 5th standard PUBG in multiplayer. 5th standard में मेरे को जूते के लेस बांधने नहीं आते. आज I don't want to bore you too much with marketing mambo jumbo, but there is one very simple thing, two very simple things that you should keep in mind when you are coming up or conceptualizing product and service. One, of course, is need. हमेशा याद रखना, कंज्यूमर्स जब कुछ खरीदते हैं, there is always a need for something. मुझे चाहिए, इसीलिए चाहिए, there is a reason. Without that reason, consumer is never going to buy, right? जैसे if you are hungry, you need food, right? If you want entertainment, you need to watch IPL or Netflix. So there is always a inherent need. वो आपको समझना जरूरी है. कुछ भी प्रोडक्ट लेके आ गया and we don't know why the consumer is going to buy it. कोई भी किसी को भी अगर प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, बिजनेस बनाना चाहते हो, तो कुछ तो जरूरत रहेगा ना. Why would someone buy it? तो वो सवाल हमेशा अपने आप से पूछना. That's number one. Okay. Also keep that in mind that there is technology. So the entire philosophy of need has widely changed. अब जैसे देखो, पहले जब हम लोग जाते थे हॉल में मूवी देखने, राइट, या हम लोग ऑडियो कैसेट्स खरीदते थे, करेक्ट, ग्रामाफोन, ऑडियो कैसेट्स, ये सब खरीदते थे. आजकल तो वो सब खरीदने की जरूरत नहीं, पूरा इंडस्ट्री बर्बाद हो गया. अब क्या आ गया, स्पॉटिफाई, गाना, राइट, तो इंडिविजुअल सॉन्ग सुन सकते, तो पूरा इंडस्ट्री रिवैम्प हो गया. So you have to understand that there is technology. Whatever product that you might come up with, then there would be technological advancements जो ये पूरा concept of the product change कर सकता है आपका. So keep that in mind, number one. So there is always this need. Number two, when you are deciding on any product whatsoever, there are 4 things we call the marketing mix, right? One is product, the product itself. कि आप offer क्या कर रहे हो customer को, product itself. Right? Then there is the price. How much price would you set for that product ताकि लोग खरीद पाए. Then there is promotion. अपने प्रोडक्ट लेके आया हूं, लोगों को तो पता होना चाहिए ना कि ऐसा एक प्रोडक्ट है मार्केट में. That's promotion. And finally is place. How would you make that product available to the customer? For instance, देखना कुछ कुछ मोबाइल फोन सिर्फ फ्लिपकार्ट में बिकता है, स्टोर में नहीं मिलेगा आपको, right? So this is how I am making the products available to the customer. To start off with, in your entire journey of creating a product and coming up a business idea, so on and so forth, always understand that there would be a need, and then there would be product, price, promotion, and place, right? Up how technology is changing this entire ball game. Let me give you one more example, and then we'll call it a day. अभी normally आप लोग दूध के पैकेट खरीदने जाते हो ना, कभी कभार मम्मी पापा ने बोला कि बेटा दूध लेके आओ, अब जाते हो ना, एंड यू बाई मिल्क पैकेट्स एंड यू पुट. अब जब मिल्क पैकेट खरीदते हो, क्या देखते हो ज्यादा से ज्यादा आप? वही देखो, अगर प्रोडक्ट प्राइस प्रोमोशन प्लेस के हिसाब से देखते हैं तो प्रोडक्ट तो आपका मिल्क पैकेट है, उसका प्राइस मान लो 28 से 30 रुपया रहेगा आधा लीटर का, राइट. देन प्रमोशन, यू नो मदर डेयरी के प्रमोशंस आते हैं, एंड यू नो कि आप जाके रिटेल स्टोर में आपको मिल जाएगा. प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस मोटा मोटा यही है. एंड एज अ कंज्यूमर आप जाके वो खरीदते हो, क्या देखते हो ज्यादा से ज्यादा? प्राइस,
या डेट ऑफ एक्सपायरी, ठंडा है या नहीं है, प्रॉपर क्लीन है नहीं है, आप लेके आ जाते हो, दैट्स अबाउट इट। वर्लपूल एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है मार्केट में, उस प्रोडक्ट, दैट प्रोडक्ट इज IoT इनेबल्ड, मतलब जैसे आप इधर आपके हाथ में स्मार्ट वॉच पहनते हो, तो दैट स्मार्ट वॉच मॉनिटर्स एवरीथिंग अबाउट योर बॉडी, राइट? सिमिलरली दैट रेफ्रिजरेटर मॉनिटर्स एवरीथिंग योर एक्टिविटी विद इन दैट रेफ्रिजरेटर, मतलब कितना खाना आपका वेस्ट होता है, कितना खाना रखते हो, विच ऑल डेज डू यू हैव व्हाट सॉर्ट ऑफ फूड, राइट? व्हाट ऑल कोल्ड ड्रिंक्स डू यू लव, व्हाट ऑल चॉकलेट्स डू यू लव, ये सारा चीज वो मॉनिटर करता है, बिकॉज अंदर कैमरास लगे हुए हैं एंड इट इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट, वो ऑटोमेटिकली मॉनिटर करता है। प्रीटी सिंपल, राइट? जैसे स्मार्ट वॉच आपका बॉडी मॉनिटर करता है, वो आपका फ्रिज की इनसाइड मॉनिटर करता है, और वो मॉनिटर करके ये देखता है कि हर मंगलवार के दिन आपका जो मिल्क का पैकेट है वो हो जाता है खाली। वो क्या करता है, संडे अमेज़न में एक ऑर्डर प्लेस कर देता है ताकि मंडे इवनिंग आपके डोर पे मिल्क कार्टन आ जाए, ताकि ट्यूसडे अब जब मिल्क कार्टन खाली हो गया तो आपके पास ऑलरेडी मिल्क कार्टन है। वर्लपूल इज कमिंग अप विद दैट टेक्नोलॉजी, तो आपको दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। नाउ यू सी द प्रॉब्लम हियर, मिल्क पैकेट खरीद कौन रहा है? फ्रिज खरीद रहा है ना। तो ये जो हम प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस की बात कर रहे हैं, पहले तो मार्केटर्स क्या करते, प्रोडक्ट लेके आया, प्रमोशन, फिर प्लेस, ये सारा चीज तो मैं कंज्यूमर को जाके बता रहा हूं ना कि सर ये रही मेरा दूध, ये रही इसके पैकेट, इसके प्राइस, ये वो। अभी तो किसको बेचना है ये चीजें? बेचना किसको ये चीज? फ्रिज को, राइट? आदमी तो खरीद ही नहीं रहा है, वो तो फ्रिज खरीद रहा है भाई। So you see the entire philosophy of marketing, we started off with technology and this is how technology can actually change the way। अब अगर मैं बोलता हूं कि भैया प्रोडक्ट अगर खरीदना है तो नीड हो देखना जरूरी है ना, किसका नीड? कंज्यूमर का नीड। अभी किसका नीड देखना जरूरी है? यू सी, तो फ्रिज डिसाइड कर रहा है ना क्या खरीदेगा क्या नहीं खरीदेगा। So this technology is coming soon, so whatever product that you conceptualize ever, make sure of course you would have product price promotion place, but the very philosophy of consumer might change, the very philosophy of the entire marketing mix might change, but yeah, still आज के दिन में भी it holds true that there is a need when why people buy things, and of course when marketers go about their products, they always look at this marketing mix, the product itself, the promotion, the price, and the place. All right, thank you so much guys, and wish you all the best for the next of the day. All right, are we on time? Yeah, okay. All right, thank you so much man.